Good morning students, welcome to Premchand Memorial Public School. I am here to teach English Reader of class 8. This is our book and name of our book is English Reader of class 8. So dear students, please take out your book and open the lesson 3. This is lesson 3. Our lesson name is Our Divine Music and page number 15. Now let's start our lesson. So, what says our chapter name? Our divine music means music which connected with God. I think you all understood about divine. Our divine music means music which connected with God. Means with our soul, with our God. Now we will read our chapter. The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes. Why? The very origin of music and other fine arts is in itself a story. The creator Brahma made this universe. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls, And the giant forest. trees, as also the nimble deer, the colorful peacock, and the Exquisite flowers. But he was sad. His consort Saraswati asked him the reason for his sadness. Here, this para tells us that our Indian music history is fulfilled with stories and true stories. Why the origin of music and other arts is in itself a story. Now, our universe creator is Brahma, means Brahma create our universe. He creates so many things beautiful and delight. He created impressive mountains, deep noise, waterfalls, and the big forest, trees, quick active deer, colorful peacock, and very beautiful flowers. But Brahma was sad. After looked sadness of Brahma, his company Saraswati asked him the reason of his sadness. Here, this paragraph tells us that हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक मतलब इतिहास इंडिया म्यूजिक का स्टोरीज से भरा हुआ है, रियल स्टोरीज से भरा हुआ है. ओरिजिन जो है म्यूजिक का वो आर्ट खुद ही एक स्टोरी है, खुद ही एक कहानी है. हमारे जो यूनिवर्स, हमारे जो दुनिया के निर्माता हैं ब्रह्मा, उन्होंने यूनिवर्स बनाया है, पूरी दुनिया बनाई है. उन्होंने क्रिएट की है बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें. उन्होंने क्रिएट किया है इम्प्रेसिव माउंटेन रेंजेस, डीप नॉइज वाटरफॉल्स, बड़े बड़े फॉरेस्ट, निम्बल डियर मीन्स एक्टिव डियर, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पिकॉक, एंड द एक्जिक्यूट फ्लावर्स मीन्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. बट ही वॉज सैड, लेकिन वे दुखी हैं. क्यों? ये चीज देखकर उनकी कंपनी, उनके साथ जो रहते हैं सरस्वती, उन्होंने ये बात पूछी कि आपके सैडनेस का क्या कारण है. नाउ लेट्स रीड. ब्रह्मा सेड, इट इज ट्रू, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शॉवर ब्यूटी एवरीवेयर, बट वट इज द यूज? माई चिल्ड्रन, द ह्यूमन शुड सिंपली पास them by. They do not seem to be sensitive to the beauty around it. It seems to have been wasted on them. This creation seems to be purposeless. When Saraswati asked the question to Brahma, Brahma replied to Saraswati that it is true, I have created all beautiful and impressive and delight beauty. But it is useless because my children, it means humans. Here, my children is used for humans. Do not feel the beauty around them, it wasted, and all the creation seems to be purposeless, means no use of the beauty. Here, ब्रह्मा कहते हैं सरस्वती जी से कि जो भी चीज मैंने बनाई है बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अट्रैक्टिव बनाई है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो कोई भी ब्यूटी को फील ही नहीं करते हैं. जो भी उनके आसपास ब्यूटीफुल थिंग्स है वो उसे फील ही नहीं करते हैं. It wasted and all the creation seem to purposeless. ये सारा का सारा वेस्ट हो रहा है और सारी की सारी क्रिएशंस जो है पर्पजलेस है, कोई यूज नहीं है उसका. नाउ
Saraswati understood his feelings and told him, "Well, let me do my share in the great world. You have created all this beauty and splendor. I shall create in our children the power of respond to appreciate and be uplifted by them. I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creation." Now, here Saraswati understood Brahma's feeling and said, "Now it's my turn to share things in the great world. If you created this all the beauty, then I created power to respond, power to feel in our children. She shall give music and arts in that all the beauty is useful." नाउ सरस्वती जी कहती हैं, अब आपने क्रिएट किया पूरा का पूरा यूनिवर्स, अब आपने अपनी टर्न पूरी कर ली, अब मेरी टर्न है, मैं अपने टर्न में शेयर करूंगी थिंग्स आपने क्रिएट किया ब्यूटीफुल यूनिवर्स। अब मैं उस ब्यूटीफुल यूनिवर्स में हमारे चिल्ड्रंस को म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब उनके साथ उनको दूंगी, उनके साथ शेयर करूंगी, विच क्रिएट एंड विच मेक्स अवर ब्यूटी यूजफुल। नाउ रीड इट फर्दर. The great muse then gave us music and the other fine arts in the hope that then man would understand something of the divine in his manifestation. A strange story, yes, but it has a great moral. Now this parallels tell us here the woman who is creative artist then gave us music and arts in a hope that then human understand something about divine in them, show beauty of because of beautiful things. Here muse indicate woman who is a creative artist inspiration. The great woman then gave us music and the other fine arts. वो वुमेन जिन्होंने हमें दिया म्यूजिक और आर्ट्स, छोटी छोटी आर्ट्स, in the hope that then man would understand something of the divine in his manifestation. जिससे जो मैन है, चिल्ड्रन है, ह्यूमन है, वो अपने दिव्य, डिवाइन मीन्स दिव्य. I told you that divine is related to the, connected to the God. In his manifestation show, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सके. Here a strange story, एक अजीब सी स्टोरी है, yes, but it has a great moral. Now we will discuss a story which has a great moral. One of the basic truth on which all Indian art is developed in that true art is never made to order. It comes as a result of an irresistible inner urge. We hear a song of Thyagaraja and are enthralled. We see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. We see some of our ancient sculptures and feel thrilled. Why? Behind all such works of art is a great spiritual urge. The artist who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite world of art. It was an act of self-effacing dedication. Here this para is tell us that basic truth is that all Indian art is never made to order, but instead it comes as a result of encourage. We hear a song Thyagaraja. Which songs are Thyagaraja? Thyagaraja are the Telugu songs. And we all hear the Thyagaraja song, which is attractive. Here in the story, people see a temple tower and look steadily for long time on its beauty. They see other carving art and feel exciting. All the arts which they saw was an act of self-effacing
self-effacing dedication. Here the meaning of effacing is disappear. So वहां स्टोरी में कुछ लोग थे जो कि टेम्पल के टॉवर की तरफ देख रहे थे. Gaze. Here the meaning of gaze is look steadily for long time. टेम्पल के टॉवर की तरफ देख रहे थे, बहुत देर तक वो उसे निहारते रहे. क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत सुंदर चीज दिख रही थी, ब्यूटीफुली. एंड वहां पर उन्होंने ध्यान दिया स्कल्पचर्स पर. What is the meaning of sculptures? Are of making figures and shapes by carving on metal or stone. स्टोन या फिर आप देखेंगे हमारा पुराना किला हो गया, लाल किला हो गया, उस पर जो है इस पत्थरों पर काशीदारी की गई है. तो वही जो कार्विंग है, जो काशीदारी की गई है पत्थरों पर, मेटल पर, उसी को जो है हम स्कल्पचर्स कहते हैं. वो और इस चीज को देखकर वो एक्साइटेड हो गए. वाओ, क्यों? लेकिन ये सब क्यों है? Behind all such works of art is great spiritual urge. The artists who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite world of art. जिस भी आर्टिस्ट ने ये सब काम करते हैं, जो भी आर्टिस्ट ये सब काम करते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस आर्ट को वर्ल्ड में शो करते हैं. बट इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन. लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है जिसमें वो उनका जो डेडिकेशन है वो डिसअपियर हो जाता है. उनका डेडिकेशन किसी को शो ही नहीं होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप दिस लेसन हेयर एंड द रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो आई थिंक यू ऑल लिसन केयरफुली एंड एंजॉय दिस चैप्टर. सो प्लीज read the remaining chapter own self. So we will discuss in our next video. Take care. Bye. Have a nice day.